बना ही नहीं होता, फिर आप ये बहस कर सकते थे कि जी ये बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बन गया है तो बस आ गया। अब यहाँ से बढ़ाते हैं ना बात को, क्योंकि अब फिर भी अगर सपोज हमने टेक्निकली हम आपसे ऐसी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अग्री करें या ना अग्री करें, मगर वो बात तो अपनी जगह ठहरेगी ना कि ये जो कानून है ये आइन के मुताबिक है या आइन से तसादुम रखता है। ये बात असल सवाल है, इधर आप फोकस कीजिए। मैं उसी तरफ नहीं, आपकी मान ली बात, वो चले मान भी लेते हैं, हम उस पर बहस में जाते ही नहीं है। आप निकाह के आ सकते हैं, चले आ गए आप, मगर सवाल तो वहीं खड़ा रहेगा ना फिर भी। हाँ, अब मेंटेनेबिलिटी और इसके हवाले से मैंने गुजारिश कर ली माय लॉर्ड। मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये जो हम आपके सामने है इनेक्टमेंट, जैसे मैंने अर्ज की कि इसकी सेक्शन मुख्तलिफ जो यहाँ इनेक्ट हुई, ये एनक्रोच हुई द एरिया विच इज़ विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। ट्राइकोटमी जो है दैट इज बीन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट negated. This enactment, I would say that totally denies the Constitution itself. Very respectfully, I'll submit. Because when one limb of the state, that is out of the three, executive, parliament, and the judiciary, when the judiciary is being somehow, as I said, very respectfully, when it will be bulldozed by enactment, which is on record on the statute book at the moment, I must say the very law would be wide and unconstitutional, and your lordship would have jurisdiction to look into its constitutionality, because at times it is said, and certain objections are raised, that the constitutional amendments may be not agitatable before the Honorable Supreme Court. My submission is definitely when there is a wide law, unconstitutional, very fundamentally, it would be within the authority of this August Court to look into it and to declare ultra vires or otherwise. So I'll be just for your ये दे दीजिए। मगर शायद ये बात सही नहीं है जो आपने कही, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी का जो केस था वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी उसको देखा गया और कहा कि ये अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी देख सकती है। तो अगर आप ये दलाइल दे रहे हैं कि कानूनी तौर पे तो ये नहीं कर सकते हैं, आइन को तरमीम करके ये काम कर सकते हैं, तो फिर वो फैसला आपके रास्ते में आएगा। डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी का केस जो कि 21वीं तरमीम चैलेंज की गई थी, जिसमें कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसको इस अदालत ने फैसला किया उसको देखा जा सकता है, मगर मेजॉरिटी ने कहा कि ये ठीक है और माइनॉरिटी ने कहा ये ठीक नहीं है। तो ये बात आपकी कहना कि तो फ़र्क क्या पड़ेगा अगर आप कहते हैं आइन तरमीम करके, अगर यही चीज़ अगर एक आइनी तरमीमी बिल में आ गया होता और आर्मी तरमीमी एक्ट बन गया होता तब भी अदालत देख सकती है, या आप कह रहे हैं कि अदालत नहीं देख सकती है? अदालत देख सकती है, तो फिर ये आपका आर्गूमेंट तो खत्म कर रहे हैं आप खुद ही। नहीं, फिर आप आर्गूमेंट तो अपना मेजॉरिटी व्यू यही है जो आपने फरमाया जी। मैं गुजारिश ये करूं कि ये ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स दिस पॉइंट वाज रेज्ड बाय सर्टेन, नहीं वो छोड़िए ना, फैसला जो हो गया अब खत्म हो गई बात। अब कोई आर्गुमेंट तो बहुत सारे रेज होते हैं जी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुड बी, तो ये फिर हल नहीं है इसका। आप फिर ये नहीं कह रहे हैं कि अगर ये आईनी तरमीम से आ जाए तो ठीक है, आप कहते हैं हो ही नहीं सकता है, फुल स्टॉप। देखिए मैं चाहे परमीमी तरमीम करो या आप कानून को मैं ये गुजारिश करूं, इस वक्त ये इनेक्टमेंट जो है एक्ट 17 ये इन क्वेश्चन है जी। अब ये कि आने वाले दिनों में पार्लियामेंट क्या करती है और किस तरह से कानून साजी करती है, ये तो सवाल आएगा एट द टाइम व्हेन सर्टेन लेजिस्लेशन दे आर बाय द पार्लियामेंट। इस वक्त तो इस एनेक्टमेंट के हवाले से मैं बात करता हूँ कि इसमें आपकी इंटरनल वर्किंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और उसके अलावा आपकी ज्यूरिसडिक्शन 184(3) और उसमें ऐड कर दी गई
अपील भी। तो ये, और आखिर में जब ये कहा गया कि कोई कानून, कोई प्रेसिडेंट, कोई रूल, कोई रेगुलेशन किसी तरह से भी ये जो एनेक्टमेंट है इसको अफेक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट ने अपनी मैंडेट से निकलकर जुडिशरी का जो डोमेन है उसके अंदर दाखिल हो गए। सो माय सबमिशन। अगर आप एक बात पे मजीद रोशनी डालना पसंद फरमाएं। जी जी। जब आप अदालत की आज़ादी की बात करते हैं, ये अदालत की आज़ादी अज खुद एक नायाब चीज़ है या अदालत की आज़ादी लोगों के लिए होती है, लोगों के इख्तियारात के लिए होती है? इसलिए अदालती आज़ादी क्या खुद एक, जैसे अंग्रेजी में कहें, स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट है जिसको हमें हर हालत में उसका दिफा करना चाहिए। यह अदालत की आज़ादी को इसलिए दिफा करना चाहिए क्योंकि अगर अदालती आज़ादी नहीं होगी तो अवाम व ख़ास के जो मसाइल हैं उनको आज़ादाना तौर पर नहीं सुना और तय्युन किया जा सकता है। तो आप सिर्फ रुक रहे हैं एक बात पे, अदालत की आज़ादी, मगर आप उसको जोड़ नहीं रहे हैं आगे वाली बात को। तो या तो कहें कि हाँ अदालती आज़ादी खुद ही एक है, उसका मौक़िफ़, उसके आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मेरा सवाल, आप बात समझ गए, इस पर रोशनी डालिए। बिल्कुल समझ गया। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अदालत बजाते खुद अगर फ़र्ज़ करे तश्कील दे दी जाए और उसकी जो फंक्शंस हैं उसके साथ जो रिलेटेबल एरिया है वो अगर उसका हिस्सा नहीं बनता, यानी अवामुन्नास और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उनके हकूक़ को एनफोर्स करने के हवाले से, तो दैट इज़ द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर सो फार एज 184(3) इज कंसर्न। सो मेरी गुजारिश है, मैं समझा नहीं जवाब आपका क्या है, आप क्या फरमा रहे हैं, मैं समझ नहीं ये कह रहा हूँ कि एक्सेस टू जस्टिस जो है, नहीं, अदालती आज़ादी खुद ही हदफ है या कोई और भी मतलब इसका होना चाहिए? मैं ये गुजारिश करूँ कि अगर मुझे इजाज़त दें तो फिर मैं इसको एक और पैराए से आपके सामने रखता हूँ। हाँ, देखिए, आर्टिकल 7 कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को डिफाइन करता है और उसमें जुडिशरी नहीं है। इसी तरह स्पेसिफिकली 184(3) जो है, जिसमें 199 की वर्च्यूज भी बाकायदगी से मौजूद हैं, इन दोनों को अगर देखा जाए तो फिर ये एक जुरिस्डिक्शन जुडिशियल रिव्यू की जो है वो क्रिएट होती है फॉर द पर्पस ऑफ लुकिंग। मैं आपका काम आसान कर देता हूँ, एक मिसाल दे देता हूँ। अगर कल पार्लियामान एक कानून बनाती है कि बेवाओं को के केसेस को तरजीह दी जाएगी, ठीक है, ये पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत कर रही है या नहीं कर रही है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है जब तक आप इसकी ज़्यादा वजाहत ना कीजिए। या तो कहिए जी हाँ ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप जैसे जिसको तरजीह देना चाहें। इस वक्त जो आपके सामने इशू है, नहीं, ये मैं आपसे सिर्फ समझना चाह रहा हूँ, सिर्फ आप आज़ादी अदलिया की बात कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि इसको आप उसके साथ जोड़ नहीं ले रहे हैं कि लोगों के फ़ायदे के लिए, लोगों के नुकसान के लिए। तो फिर तो समझ जाएगी कि अगर लोगों का नुकसान हो रहा है, हम इधर बैठे हैं लोगों को केस करने के लिए ना। तो अगर कोई चीज़ रास्ता हमवार कर रही है या रास्ता रोक रही है लोगों को इंसाफ दिलवाने में, तब तो आप दलाइल दें। मगर आप सिर्फ कहें क्योंकि ये हकूक़ वो पामाल कर रही है पार्लियामान अदलिया का, तो बस यही ख़त्म, इसी पे कानून दम तोड़ देगा। मैं गुजारिश ये करूँ कि जब हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, नहीं ना कीजिए ना, मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप कह रहे हैं ये सिर्फ खुद ही काफ़ी है या इसको जोड़ना है किसी चीज़ से, ये बताइए। ये मैं गुजारिश करता हूँ, यही तो मैं अर्ज करने, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेरे साथी ने मुझे रोक लिया, मेरे साथी ने मुझे ही रोक लिया। ये सारी बातें हो चुकी हैं पहले तारिक साहब के होते हुए, ये सारी डिस्कस कर चुके हैं, उनसे हमने क्वेश्चन पूछ लिए, उनसे जवाब आ भी जाएंगे। आप अपनी जो पिटीशन है 20, उसके हवाले से आपने बता दिया कि फलां जो ये सेक्शंस हैं ये एटावारीज, यही कह रहे हैं ना? जी जी। उसके बारे में कुछ बताइए अपनी पिटीशन के हवाले से।
अभी जवाबात की तरफ ना जाइए कि आपने ये क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका जवाब, उसको छोड़ दीजिए, वो जवाब वो देंगे तो देख लेंगे। आप अपनी जो पिटीशन फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर आर्गुइंग बिफोर अस, उसके बारे में बात कर लीजिए, बस ठीक है। मैं ये गुजारिश करूं कि बुनियादी तौर पर जो सवाल, जो पॉइंट्स मैंने एजिटेट किए हैं और जो सबमिशन का हिस्सा ही हैं, अगर इजाज़त दें तो ये मैंने इसको मुख्तलिफ जो इसके डिपार्टमेंट्स या कंपार्टमेंट्स हैं उसमें रखा और बात करके उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा कपल ऑफ पैरास फ्राम ए के ब्रोहिज बुक द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुख्तलिफ हवालों से, अमेंडमेंट के हवाले से उन्होंने क्या कहा। आई विल जस्ट मेकिंग अ सबमिशन ऑन दैट। जजमेंट्स, माय लॉर्ड, इफ योर लॉर्डशिप मे जस्ट परमिट मी, 2A के हवाले से बेसिक फीचर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन की हैं, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बुनियादी तौर पे ये अब कॉन्स्टिट्यूशन का सब्सटेंटिव पार्ट बन चुका, वो बेसिक फीचर्स जो हैं उसमें सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, ये सारा, और ये इस सिलसिले में मैं PLD 1992 सुप्रीम कोर्ट 595 इसका सब हेड B है सर, पेज 596 एंड सब हेड M, पेज 604, और उसके बाद 2015 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 1739, इसका सब हेड जो है D है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे सर। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे मैंने आर्टिकल 239 का हवाला दिया कि ये बार करता है ऐसी लेजिस्लेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट और उसके फंडामेंटल्स के खिलाफ हो, एज आई सबमिटेड टू लॉर्ड। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे मैंने जो जजमेंट्स देखी आपकी इजाज़त से, PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दी, 2000 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 751, देन PLD 1994 सुप्रीम कोर्ट 105 एंड PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट 869। आइटम 55 जो हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का 4th शेड्यूल में, लॉर्ड, शेड्यूल का हिस्सा है फेडरल लिस्ट का, लेजिस्लेटिव लिस्ट का, आइटम 55 जहाँ एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पे तस्करा है, लेकिन ये जो इनेक्टमेंट है इसने सुप्रीम कोर्ट के, मैं ये कहूँगा कि मुकम्मल तौर पर सलब किए हैं इख्तियारात और उसको अपनी गिरदाब में ले लिया है, विच इज़ नॉट परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी मैनर। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पे मैं गुजारिश करना चाहूँगा, PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 ऑलरेडी मैंने मेंशन किया, इसका सब हेड O है पेज 409 पे, और सब हेड R है पेज 412 पे। ट्राइकोटमी पे, सेपरेशन ऑफ पावर, PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट 265, इसका रेलेवेंट है सब हेड A एंड C। एक्सेस टू जस्टिस पे PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट सब हेड C, पेज 1202। पेज कौन सा बता रहे हैं आप?
PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 923 से ई है इसका सब है। इंटेंट्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जजमेंट 1992 1992 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 1202, इसका रेलेवेंट सब हेड है सी। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच इन डिफरेंट जजमेंट्स where they say constitution to be read as a whole, not one part. ये PLD 1999 Supreme Court page 57, इसका relevant subhead है H. Then same PLD 1999 Supreme Court 888, इसका ये भी 99 सुप्रीम कोर्ट है। जी दैट्स करेक्ट मेरा 888 जी। इसका एट पेज 905 सब हेड एच, ऑलरेडी PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 रेफर किया है। इसका सब हेड सी एट पेज 598 and again PLD 1992 Supreme Court 595. Lord, I'll be just reading a couple of paras with your permission. ये मैंने एक फोल्डर आपके लिए भी ये जरा दे दीजिए। इसमें ये जो बुक्स आपने लिखवाई हैं? नहीं जी, हाँ जी, ये थोड़ी सी रिसर्च मैंने की, मुख्तलिफ रेलेवेंट बुक्स जिसमें पाकिस्तान के मुतल्लिक भी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुतल्लिक भी, और अगर इजाज़त दें तो चौधरी साहब बड़ी मेहनत की आपने। जी आप माशाल्लाह, आपकी तवज्जो के लिए से। नहीं शुक्रिया। अगर इसका पेज 14 देखें, ये ब्रोई साहब की किताब है फंडामेंटल लॉ ऑफ पाकिस्तान। ये पेज 14 पे पैरा 10 है। इसका सब हेड है पावर ऑफ जुडिशरी टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? पैरा 10 है, सफा बता दें। 14A 14A। 14 पे तो सिर्फ लिखा है किताब का वो है, टाइटल है किताब का, आगे कहाँ पे है? आप पढ़ किधर से रहे हैं? 14 के बाद 14A है। 14 के बाद हमारे पास 15 है, 14A मेरे पास तो नहीं है। ये पैरा 10 है, जरा देखिए। मेरे पास नहीं, मेरे पास ये 14 के बाद 15 है, फिर पैराग्राफ 12 शुरू हो जाता है, शायद रह गया हो। पेज 18 पे है ये, पेज 18 पे है ये, पैरा 14 इसमें जो बुक का है ये फंडामेंटल लॉ ऑफ पाकिस्तान। पैराग्राफ 10 मिसिंग है, आपने 14A इसमें रखा नहीं मेरे वाली में, पता नहीं मेरे साथी के पास है। किसी के पास मैंने तो कोशिश की कि ये आ जाए। चलिए वो रह गया है तो वो वाला तो हमें दे दीजिएगा, एक सफा रह गया है। ये मैं दे दूंगा। ये जरा इसका पैरा 27 और 28 वो पढ़ लेते हैं। आप जरा माइक के करीब आ जाए, जैसे सब माइक के करीब। 27 पे, हाँ 27 है, पेज 23 पे। हाँ जी 23 पे जी फरमाइए। यह है पोजीशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कंपेयर्ड विद द पोजीशन अंडर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। इसका नीचे जो पैरा है, लास्ट पैरा, वो पढ़ूंगा क्योंकि टाइम मैंने शायद ज़्यादा ले लिया। The juristic aspect of the power as an incident of the American concept of constitution being the supreme law of the land has been stated by Kent. Thus, the constitution is the act of people speaking in their original character and defining permanent conditions of social alliance. आप कौन से पेज से पढ़ रहे हैं? ये किसी के पास है नहीं पेपर। 23 पेज पे लास्ट पैराग्राफ, 23 और लास्ट पैरा। ऊपर ये पाकिस्तान का पूरा पर्सपेक्टिव है
ये लास्ट एक प्रिंसिपल है, मैंने कहा इसको आपकी नजर कर दूं. The judiciary department is the proper power in the government to determine whether a statute to be or be not constitutional. Interpretation of construction of constitution is as much a judicial act and requires the exercise of same legal discretion as the interpretation of interpretation or construction of a law. To contend that courts of justice must obey requirements of an act of the legislature when it appears to them to have been passed in violation of constitution, it will be contend that law was superior to the constitution and the judges had no right to look into it and regard to its paramount law. It would be rendering power of agent greater than that of principal and declaring the will of the only one concurrent and coordinate department of subordinate authorities under the constitution was absolute over the other departments and competent to control according to its own will and pleasure the whole fabric of the government, the fundamental laws on which it rested. The attempt to impose restraint upon the legislative power would be fruitless if the constitution provision were left without any power in the government. ये आगे केस आ गया 28 power to declare law unconstitutional. अच्छा ये देखिए, ये मैं तो इससे बिल्कुल ही जी ये जो अल्फाज का चुनाव है ब्रोई साहब का, द जुडिशरी डिपार्टमेंट, मैं पढ़ रहा हूँ इनके लफ्ज़, मैंने भी जरा एक सेकेंड, द जुडिशरी डिपार्टमेंट इज द प्रॉपर पावर इन द गवर्नमेंट टू डिटरमिन वेदर अ स्टैट्यूट बी और बी नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल. मैं तो बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं कर सकता हूँ. हम ना तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, ना ये पावर गवर्नमेंट में वेस्ट करता है टू डिटरमिन. ये जुमला तो मुझे तो हमारे आइन के तसादुम में है. ये बिल्कुल वेरी रिस्पेक्टफुली सबमिटेड. चौधरी साहब, मुझे भी ये जुमला इस हद तक अच्छा नहीं लगा. चौधरी साहब, आपने तो हमें मातहत डिपार्टमेंट बना दिया गवर्नमेंट. उन्होंने डिपार्टमेंट बना दिया विच इज चौधरी नॉट. साहब, हम तो तो फिर आप सेपरेशन ऑफ वो पावर चीज ऐसी पेश कर रहे हैं हमारे चौधरी सामने. साहब, वो बेसिकली जी चौधरी साहब इधर जी जी आप अगर पेज 14 पे आ जाएं, ये किताब छपी है 1958 में, जी दुरुस्त. जब पहला मार्शल लॉ लगा था और इस कोर्ट ने पहले मार्शल लॉ को वैलिडेट किया था. जी दुरुस्त. क्या ये उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए? मेरा ख्याल है कि with the passage of time, definitely, what water already flown under the bridges, I would not say so, because जितनी judgment उसके बाद आई, उसके बाद तो माशाल्लाह को हमने मुशर्रफ के माशाल्लाह को. वकील साहब जरा here please. This book ब्रोई साहब की किताब was published in May 1958. मार्शल लॉ लगा था अक्टूबर 1958. जी जी. This book predates martial law. It was, I think Broi Sahab regarded it as an elementary book, if you look at the preface, as an elementary book to teach constitutional law, but it has become his magnum opus, rightly so, but it was published prior to martial law. That's correct, It has nothing to do. जी मैं गुजारिश करूँ. आप जो एक सेकंड जरा अभी आपने जो हमें पैसेज पढ़ के सुनाया ना, जरा वापस उस पे आइए. ये ब्रोई साहब के अल्फाज नहीं है. ब्रोई साहब is just quoting someone. This is Chancellor Kent, I think. जी अभी तो मैंने correct. ये जो है ना, ये जुडिशरी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट, ये अमेरिकन American कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जी. इस्तिलाहात हैं. वो मतलब उनका ये नहीं होता है उधर के, ये उधर भी ट्राइकोटोमी ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स is a very fundamental doctrine of US constitutional वही law. से हमने as a matter of fact ये calling regarding it, government capital G means the state. It means it's one of the three branches of the state. It doesn't mean, and these are not Broi Saab's words, he is quoting someone, I think. ये लेक्चर है, लेक्चर 20 commentaries on American law, volume so and so, Philadelphia. अब Actually, बुनियादी yes, तौर पे because उन्होंने he's quoting अमेरिकन someone. जजमेंट्स भी साइट की. देखिए चौधरी साहब, because he's quoting someone ना, तो obviously उस कोर्ट में तो उसी की जबान इस्तेमाल होगी ना जो उस ऑथर ने की है. जी दुरुस्त. But ब्रोई साहब का मकसद यहाँ पे था to elaborate the concept of separation of power, where, as we know, the famous words from Chief Justice Marshall in Marbury versus Madison,
It is the province of the judicial branch to determine and say what the law is. That is being perhaps more broadly explained. This is from a book of 1889, so it's part of settled constitutional law. लेकिन बुनियादी तौर पे उन्होंने ये सारे लॉज जो है ये मेडिसिन वाला आगे बेसिकली हमारे पास इसका भी रेफरेंस दिया है। ये पैराग्राफ 28 आप पढ़ रहे थे, वो पढ़िए। जी जी, पैरा 28 जो है, Power to declare laws unconstitutional, not inconsistent with giving effect to the will of the people. ये बुनियादी तौर पे अगर इजाजत दें तो इट्स वेरी रेलेवेंट। When the courts of law hold certain laws to be unconstitutional, their declarations cannot be construed as defeating the will of the people as expressed in the legislatures of the country. From what has been said so far, it would be apparent that the legal sovereign That ordains and establishes the constitution is the people, but this term ought not to be confused with the people as the voters who have returned their representative to act as legislators. The people as a historic community must be distinguished from people as a community of the entire living population with their presidents and predecessors and successors. The people acting solemnly and deliberately, says Professor Willoughby in his book, The Constitution of the United States, in their sovereign capacity, declare that certain matters shall be determined in a certain way. These matters, because of their great and fundamental importance, they reduce to definite written form and declare that they shall not be changed except in a particular manner. In addition to this, they go on to say, in substance, that so decided is their will and so maturely formed their judgment upon the matter, any act of their true will. Therefore, when the courts declare void legislative acts inconsistent with the constitutional provisions, the judges are giving effect to the real will of the people as they have previously solemnly declared. Thus, in effect, the declaring law and constitution, the judges are administering the real will of the legal sovereign, will which, having regard to view that they take impugned law, has been thwarted by the representative of the people considered as a historic community. My submission is very respectfully, basically, in this para, the will of the people, that is will, and that is what is preamble of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Sir, if I may ask you a question, the question here is, I think, of legislative competence. It's not perhaps how quote-unquote good or quote-unquote bad this law is. The question that is perhaps agitating the petitioners, from what I have understood from your submissions, you as well, is there legislative competence? If the answer is there is legislative competence, then the matter proceeds in one direction. But if the answer is there is no legislative competence, well, then that ends the matter. As you are well aware, the technical term, and I'm emphasizing this is the technical term of art used in constitutional law, that where a legislature, federal, provincial, doesn't matter, tries to make a law beyond its competence, the technical term is that it is a fraud on the Constitution. Those are very strong words. So here we have to focus, and this is perhaps what you are trying to tell us, if I'm trying to understand what you are saying, that it matters not whether this is a quote-unquote good law, whether it says that the Supreme Court should give priority to this class of case or that class of case or whatever else that this law may say or Parliament may in future say. The question is, does Parliament have the legislative competence to regulate the Supreme Court in this manner? इसमें एक section है, वो आपने अभी हमें पढ़ा नहीं हमारे सामने. I think it is section 7. Section 7, sir, I just referred to. वो जो है, अब देखिए ना, अब ये an application pleading urgency or seeking interim relief
shall be fixed for hearing within 14 days from the date of its filing. Now this may, some may say this is a quote unquote good thing. Question is, can the Parliament regulate Supreme Court down to this nitty-gritty level? Is this what independence of judiciary and separation of power is all about? इस पे जरा kindly हमें कुछ बताइए. My Lord, very respectfully, I just, since certain things were going on in a certain manner, I prepared this brief starting from the oath itself, my Lord. As a matter of fact, when we say that to preserve and defend and three words. इकराम साहब इकराम साहब Just उनको जवाब मिस्टर दे इकराम मैं अपने प्लीज नजर साहब ये जवाब दे रहे थे मैं मुनीर साहब आपसे एक का और चीज उसमें पूछ लूं. My Lord. इकराम साहब ये इधर देख लीजिएगा राइट से आपके I'm लेफ्ट sorry. साइड. सॉरी, My Lord. ये आप 58 की जो बुक कमेंट्री पढ़ रहे हैं इस वक्त, तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे जो आप बात कर रहे हैं, तो आइन का जो 73 का आइन है उसके मुताबिक तो बताइए ना कि इसमें क्या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है और ये कहाँ से ये अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर होता है. तो वो आइन की जो शिकें हैं जो आपके मुताबिक जिनकी इसके अंदर वायलेशन है वो तो आप बताइए ना. वो तो ठीक है, कमेंट्री है, वो अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस और उसके मुताबिक है, बट व्हाट इज द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस मैं गुजारिश what is the ultra virus? मैं गुजारिश You have to point out such articles in the constitution. उसके मुताबिक ये जो है अब आर्टिकल 191 है, डिफरेंट लेजिस्लेटिव एंट्रीज हैं, उसमें आप बता दीजिए ना. मैंने ये केस बेसिकली इन ए हम्बल वे जो तैयार किया तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के पर्सपेक्टिव में ही सारा जी जी आपके सामने. अब कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आता हूँ, बट इफ परमिट में दिस इज द बेसिक कि जी अल्ट्रा वायरस तो आप अपने आइन की शिकों से डिक्लेयर करवाएंगे ना. जी मैं गुजारिश करता हूँ, अगर इजाज़त दें तो ये जो आपने फरमाया कि ये बेसिकली विल ऑफ द पीपल, ये मैं क्यों कहता हूँ. अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाऊँगा वेरी रिस्पेक्टफुली, लेकिन अगर इजाज़त हो तो मैं AR कार्नेगी साहब की एक देखिए 45 मिनट फ्रॉम द वॉच आपको मिल चुके हैं. अगर आपको सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं, अगर आप सोच समझ के तहरीरी जवाब देना चाहें, ये भी आपके पास मौका है. ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा जवाब दे दें बाद में कहें ओहो बेहतर होता मैं ये कहता. तो आप ज़रा, और भी वकील हैं, हम आपको पूरा दिन सुनना चाहते हैं मगर इजाज़त नहीं है क्योंकि बहुत सारे हमारे पास केसेस भी हैं. इसको हमने इस ऊंट को एक किनारे लगाना है. सिर्फ एक 4 लाइनें मैं ज़रूर पढ़ूंगा आपकी तवज्जो आप के लिए. तो बता दीजिए ना वो इसी में से सर. कौन सा पेज है, सफ़ा बता दें पहले. ये लॉ एंड जुडिशरी इन पाकिस्तान, ये किताब उन्होंने लिखी जस्टिस AR कारी साहब ने. इसका चैप्टर 25 है, सफ़ा 41 पे 41. Yes, sir. जी फरमाइए. AR Cornelius participated in the 3rd Asian Judicial Conference held in Bangkok and contributed a paper on the judicial control. ये ना पढ़िए ना, पढ़ देना जो बात नहीं, करने की है. ये अगली 4 लाइनें हैं. Cornelius maintained that power of judiciary to control administrative and legislative action derives its force from law and constitution. And then to 1962 constitution था, 98 का उन्होंने हवाला दिया. अगली लाइनें सेंटर से मैं पढ़ूंगा. Added to this power given to the courts to pronounce upon the constitutionality of all laws. Where a law was made in direct violation of fundamental rights or of any other positive provision in the Constitution, it was liable to be invalidated. इस पे तो कोई दो राय भी नहीं हो सकती हैं. और हमारे साथी मजहर साहब ने आपसे सवाल पूछा कि वो बता देना कौन सी शिक का इनकी वायलेट हो रही है फंडामेंटल राइट की. करूं सबसे पहले मैं भाई साहब एक सेकंड. जी. There are 2 questions involved here. One is legislative competence. First, you need to address the question whether or not the Parliament was competent to undertake
this sort of legislation which directly affects the working of the Supreme Court and the internal working of the Supreme Court. Once you have crossed or answered that question, whether or not it was competent under the Constitution, then we need to examine the question which provisions of the Constitution are certain sections of this or all sections of this law in conflict with. These are two different questions. One is of competence, second is of conflict. तो आप इनको अलग-अलग बताइए कि जी competence क्यों नहीं है, और अगर competence नहीं है तो that ends the matter. You cannot do it. But if there is competence, then we look at the other aspect. कि आपने कानून तो पास कर दिया, but it is in conflict with such and such article of the Constitution. That is a different argument. पहली बात तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि जैसे मैंने गुजारिश की आर्टिकल 239 मैं एक चीज, अगर इफ दिस केस गेट्स आउट ऑफ हैंड टोटली, तो जितना वक्त आप लेंगे दूसरे पिटिशनर्स का वक्त मैं फिर उसको कर्टेल करूंगा। जी देखिए कि आज के बाद ये केस नहीं चलेगा, ये आप सोच लीजिए। अब ये नहीं कि आप बहुत ही बारीकियों में चले जाएं, और हम आपको बिल्कुल वक्त देंगे, मगर फिर आप तैयार रहिए रात तक बैठने के लिए आज के दिन। बिस्मिल्लाह। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा, मालूम होता है कि आप दूसरे हजरात को भी वक्त देना चाहते हैं, डेफिनेटली दे हैव द राइट सर। मैं गुजारिश करना चाहूँगा वेरी प्रिसाइजली, ये जो ओथ है इसको मैं सिर्फ वो जो 3 लफ्ज़ हैं, प्रिजर्व करना, डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना, ये इसको मैं एक हसार करार देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जब आप ओथ लेते हैं तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के जो एम्बिट है उससे बाहर नहीं निकल सकते। और ये चौधरी साहब देखिए, वो सारी बातें जो आप कर रहे हैं, जैसे माय लॉर्ड ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, कि हमें उससे इतराज़ नहीं, आपने सिंपल 2 बातें बतानी है। माय लॉर्ड जस्टिस इजाज साहब ने आपसे पूछा कि ये कॉम्पिटेंस है पार्लियामेंट का कि ये एक्ट बना सकते या नहीं बना सकते। आपके पिटिशन में देयर इज नो ग्राउंड इन दिस, कोई आपने ग्राउंड नहीं लिया कि उनकी, यानी आप कॉम्पिटेंस तो मान रहे हैं आपके पिटिशन से हजार, लेकिन आप ये कहते हैं कि ये एक्ट इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सी बात है, ये बता दें कि ये फ्ला शिक से कन्फ्लिक्ट कर रही है, दैट्स ऑल। आप इतना लंबा नहीं समझ रहा। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूँगा कि 239 बजाते खुद बार करता है कि अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं पार्लियामेंट के अंदर, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को किसी तरह से भी लिया नहीं जा सकता। अब दूसरी बात, 39 पढ़ तो लीजिए, क्या है 239 पढ़िए ना सर। मैं पढ़ ये तो बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे इसका क्या ताल्लुक? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है ना, लॉ बनाने। मैं गुजारिश करता हूँ, A bill to amend the constitution may originate in the either house and when the bill has been passed by the votes of not less than 2/3 of the total membership. It has nothing to do with the law presently under challenge. ये इसमें बुनियादी तौर पर जो बात कहनी है वो ये है कि 2/3 मेजॉरिटी के बगैर आइन में कोई तरमीम, कोई बिल मूव ही नहीं हो सकता। ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस जो है कि पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट नहीं थी कानून बनाने के लिए, क्योंकि जो कानून इन्होंने बनाया है, दिस एसेंशियली रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हिच इज अ टोटली डिफरेंट स्पीशीज of laws and which requires a totally different procedure that the parliament needs to adopt. And that since that procedure has not been adopted, it can be argued that the parliament was not competent to make this law which has the effect of amending the constitution. That's my lord, that's my submission. ये चौधरी साहब इस तरफ, my lord, as I see this law and its provision, all it does is to secure and ensure access to justice right. Is the parliament not competent to legislate in relation to access to justice? Providing an appeal is access to justice. Even regulating the
untrammeled powers of the Chief Justice is also as an element of access to justice. Is the Parliament not competent to legislate beneficially for the people? मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट की हो तो फिर वो आप आइन की बात कर रहे हैं, वो आइन थोड़ी अमेंड हो रहा है, आपसे सिर्फ एक्सेस टू मैं गुजारिश जस्टिस, करूँ मैं अगर आपसे इजाजत दें एक्सेस टू जस्टिस का पूछ जी रहा मैं हूँ। उसी तरफ आ रहा हूँ Is कि the Parliament आर्टिकल 8 जो है वो बार करता है। आर्टिकल 8 बाकायदगी से फ्रेमवर्क है जिसके अंदर पाबंदी लगाई गई कि आपने इसको किसी तरह से भी मास्टर 2 एक्सेप्शन हैं इसमें कि इमरजेंसी में कुछ प्रोविजन सस्पेंड होंगी। वकील साहब, दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे गए, सबने पूछे हैं। एक लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे बता दीजिए और एक अल्ट्रा वायरिस पे बता दीजिए। और आप कहते हैं कि कॉम्पिटेंस है ही नहीं पार्लियामेंट की लॉ बनाने की। पार्लियामेंट वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू लेजिस्लेट। एक हो गया, सबमिटेड माय लॉर्ड। बताएं तो सही कैसे कि पार्लियामेंट लॉ ही नहीं बना सकती, बताइए क्यों? नहीं इस वक्त वो बताइए, प्रोविजन बताए ना, नहीं है कॉम्पिटेंट। मैं आर्टिकल 239(3) That is amendment in the constitution. That is amendment in the constitution, not about the law. अगर इजाजत हो तो मैं आपसे कि बेसिकली ये जो लेजिस्लेशन है, ये लेजिस्लेशन एक तरफ तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इफेक्ट कर रही है और सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल वर्किंग को मुकम्मल तौर पे रेगुलेट कर रही है। ये होगी दूसरी बात सर। दैट आल्सो That is the effect, sir. That is the effect. आगे मैं आज करूँ सर। इसके बाद मेरे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अभी जब भी होंगे किसी तरह से भी, तो मैं ये गुजारिश करूँ कि वो किसी तरह से भी वो लेजिस्लेशन वैलिड नहीं होगी, वो अल्ट्रा वायरिस की कॉन्स्टिट्यूशन होगी। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये बुनियादी तौर पे पार्लियामेंट ने वो तमाम चीज़ें जो उनके इख्तियार में ना थी वो उन्होंने कर दी। सो दैट इज द आर्गुमेंट। फर्दर मेरा ख्याल है मैं तहरीरी तौर पे भी सबमिट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया बहुत बहुत चौधरी साहब। अब कौन से हसन इरफान आएंगे या दूसरे साहब आएंगे? कौन आ जाइए, आप करना चाह रहे थे, आप नंबर बता दीजिए जी। 19 है। It's Mudassir Hassan Jura. Lord, I have also submitted the submissions. It is CMA 8300, and there is another booklet that I was able to prepare today that I would be submitting during the course of the arguments. 19 निकलवा जी। My Lord, I would, Your Lordship, the case law is very well known. I would not go into the case law details I have mentioned in my arguments, but I would touch upon the broad-based thing, and I'm grateful to Your Lordship in saying that we have to go by the letter of the Constitution. The Constitution is very clear. I am confident that I may be able to convince Your Lordships that by reading the Constitution itself, we may be able to find an answer whether this is a valid law or it is not a valid law. So in essence, Your Lordship, the question that was asked is about legislative competence. Now, legislative competence has two parts, and in fact, in the we haven't asked you any question. My Lord? We haven't asked to the previous counsel. Go leave it for them. You argue a case as My you Lord, want to. This is a legal question that I would say. It has a process, whether there is a legislative competence, and even if they have the legislative competence, whether the contents of the legislation are within the framework of the Constitution. And then the third question, of course, in the light of the provisions of Article 191 would apply, because 191, and I would like to read those provisions also, does not places a further requirement that even if a law is passed, Your Lordships have to implement that law, because it says, subject to Constitution and law, the Supreme Court may make the rules. So that is something I believe is, which is something which is missing in the Constitution. However, Your Lordship, first of all, the maintainability questions, very briefly, there are 3 points
which are relevant for maintainability. The first is that it touches upon the judicial functioning of the Honorable Supreme Court. Now, judiciary is one of the three pillars of the Constitution or the state, and therefore, if we go by mathematics, it covers around 33%, if not more. So that is a very substantial question. Please make some legal arguments. Malot, that is. No, please, आगे बढ़िए ना. Malot, 33%. What sort of argument is Malot, this? because it touches upon one of the pillars of the Constitution. आगे बढ़िए, And please. if it's a fact, that pillar, then आगे it affects. बढ़िए. Malot, the second point is, of course, if your lordship may see Article 50, if I may. 50? 50, Malot. And these points, Malot, I'm trying to show to your lordship that there is a very serious questions which are to be considered. 50 defines the Majlis Shura. Can you tell us what point you're making before we start reading something at My lord, random? this is on the maintainability of the petition. There shall be a Majlis Shura, Parliament of Pakistan consisting of President and two houses to be known respectively as the National Assembly and the Senate. Now, my lord, the submission is that this bill was sent to the President for assenting. The President, as a part of the Parliament, raised an objection to this thing, and there was a press release. The President Please questioned. argue your petition. My lord, that is. Which ground is this? My lord, that is Where on have you the- stated this in My your lord, petition? my lord, on the legislative competence. If your Where lordship- have you stated all these things? Lord, this is an ये हुआ elaboration. President Day This is an elaboration of my arguments that your No, no, lordship. no, no, you cannot argue something factual which we don't know about. My lord, this is, I have a paper book that your lordship I have would be submitting now because there was a press release and this is. फिर आप part आगे of the press record. release पे. My lord, I would, if your lordship is not convinced on that, I would. I mean, it's skip not a back, question but of that is- convince. I don't think it's any sort of argument. My lord, the reason why I'm submitting this is that even within the parliament itself, there is a dispute whether this law could be passed by the parliament because the presidential. अच्छा, suppose we agree or disagree, what difference will it make? My lord, because it would give your lordship the thing that this is a very serious matter which has to be considered by your lordship because the parliament itself is debating and discussing whether they have the legislative power or not. And president is the head of the federation. So when the president is saying and part of. He the told head- you, he My told lord, you. My lord, it is part of the record, my lord. No, no, which record? My lord, Before this is us? the press release issued by, my lord, this is, No, before us, which page is it? my lord, both. If he's told you something privately, well, that's good for you. My lord, this is the paper book that I have prepared. You for your don't, lordship. अब आप बताएं ना रिकॉर्ड पे रखिए बताएं ना ये आप नहीं हम कुछ नहीं लेंगे आपसे ऐसे उठा करके कागज आप दे रहे हैं कोई तरीका नहीं है फाइलिंग करने का My lord, ये अभी नहीं हम नहीं खाली, my लेंगे lord, सॉरी record ये हुआ बिल्कुल था। My lord, जो मर्जी आप अगर कोई लीगल आर्गुमेंट दे रहे हैं कोई बुक से कॉपी दे रहे हैं जैसे But I would- चौधरी साहब से सीखिए उन्होंने बुक्स का हवाला दिया जो उन्होंने my मुंजमद lord, कर वो दी मैंने 3-8. इरफान साहब प्लीज आर्ग्यू द My केस lord, my lord, I would go to 184. जी And my lord, the relevant grounds I have mentioned, they are starting on 184, is starting from page 8 of the paper book, the submissions that I have made. Your lordship, if your permission, I would start the wordings of 1843, my lord. My lord, the relevant part is without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights referred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in the said article. Lord, the legal submission is that this provision of 1843 is not beginning with subject to constitution or subject to the law. This is an open-ended, wide
provision, which even when we compare it with Article 199, 199 is subject to the Constitution and it permits only an aggrieved person to bring out a petition, whereas 1843 does not places any restriction that a person who comes to this honorable court be an aggrieved person. And Lordship, the second important point on reading 1843 is that it talks about the Supreme Court shall. This is a mandatory requirement that it is the Supreme Court by itself, whereas the legislation that we have challenged has provided for a committee to decide whether they're. So in essence, what the law is doing, the law is replacing as a first step the Honorable Supreme Court's function and transferring it to a committee which may not even be considered as a judicial function. That would be an administrative function. And the third condition of 1843, or the power. Are you, just clarify this, are you contending that individually Chief Justice of the Supreme Court cannot invoke this power and this power vests exclusively in the Supreme Court, which means the Chief Justice and all the judges of the Supreme Court? Please clarify this. Lord, what are you saying? My Lord, that to that, my Lord, 191 gave the power of. जवाब दे रहे हैं, अब दूसरी तरफ आप चले जा रहे हैं. My Lord, no, my Lord, I'm coming to that question because that is relevant. In the context, it's relevant. My Lord, the power was to the Supreme Court. The Honorable Supreme Court sat down, they made the rules. And all the judges, the Supreme Court, then delegated their own power as a whole to the Honorable Chief Justice through the rules. So that is. कहाँ लिखी है ये बात? My Lord, that is in the rules, my Lord. Whether the Supreme Court can grant the power assigned to the Supreme Court in the Constitution to someone in the Supreme Court, say to the Chief Justice or to the Senior Puni or to anyone. Can this be done? That is. ये delegation of power का That is the part है ना, delegation of power. That कौन is. सा rule है? Article 191 empowers the Supreme Court to make rules. My Lord. And those rules are administrative in nature. Absolutely. And the formation of benches is an administrative power. So is the fixation of cases. My Lord. Now, what this law does is, notionally, it removes that power from the Chief Justice and assigns it to 2 more judges, a committee of 3 judges. Yes, my Lord. ठीक है? अब इसमें अगर वो delegation का element है तो yes, in exercise of administrative powers, the court can delegate some of the powers to one of the judges, be it the Chief Justice, be it a committee, be it 4 judges, be it 6 judges. That power has been exercised under Article 191, which is a constitutional mandate. Absolutely. So where a constitutional mandate empowers the Supreme Court to make rules, those have a certain sanctity attached to them. My Lord, we have to also see what is the Constitution mandate as a whole. The Constitution itself recognizes this principle of delegation of powers. Even the Parliament has the parliamentary parties. The function, certain functions like the law-making function is delegated to the select committees or the thing. So that also works in the company law also. That is, I think, one of the fundamental principles of law as a whole, that the powers can be delegated to another person or within that body. So that is what my submission is. This is not a delegation of power. Yes, This is not a delegation of power. ये तो Chief Justice along with 2 members of the bench or the Supreme Court will make the cause list or the benches. Chief Justice has himself not delegated any power to the other 2 judges. So this is not the case of delegation. Then the question would arise that the Supreme Court delegated the power to the Honorable Chief Justice. Now, whether this Honorable Supreme Court itself as a whole can withdraw or replace those powers, or the Parliament can do that. The Parliament cannot do that. Is it your argument that Article 191 does not
delegate this power to the Parliament. To the Parliament, absolutely. In order to shield the working of the Supreme Court, Article 191 specifically says the Supreme Court would make its rules. And my lord, Now, what if one were to flip the argument, what prevents the Parliament from making a law to say, okay, matters relating to 184(3), formation of benches, sitting of benches, the number of judges who would sit on each bench would now onwards be determined by the Parliament. right? Would be determined by the Parliament. My lord. I mean, अगर My lord, उनके then it- पास अगर legislative competence है, तो वो ये कानून क्यों नहीं बना सकते? Lord, My that- question to you is that. My lord, my answer very quick. If I may add to that, just add to that, what if Parliament makes a law saying that all of these things which my learned colleague has specified, the power to that is delegated to the federal government? Yes. My lord, There is no end to it. Then their separation of powers becomes a completely illusory concept. Whereas there are innumerable judgments saying it is one of the most fundamental principles. The executive branch has been kept out. The Attorney General argued on the last date that in respect of rule-making power, previous constitutional dispensations had said rule-making power will be with the previous sanction of President, meaning executive branch. Well- And learned Attorney General told us that in this law, the executive branch has been kept out of the rule-making power. But what is if this power vests in Parliament, Parliament is the federal government बनाएगी rules. my lord, if I may, I mean, there is then no end to there it. is no end to it, but if I may jump my arguments, I made them systematically. नहीं, This- आप आर्ग्यू करें जैसे आपको करना है, कितना वक्त आप लेंगे? My lord, if your lordship go uninterrupted, maybe आप- half an hour. My lord. ठीक है, हम आप वापस आते हैं। My lord. ये learned counsel एक question जो है वो ज़हन में रखिए. Again, I will reiterate, this is a law that ensures access to justice, whether it's the appeal, and also secures, promotes the internal independence of the judiciary. So is the Parliament not competent to do that? Lordship, I will answer you very. चलिए वापसी में आते हैं, हाँ। Well, नाज़रीन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की समाअत जारी थी। फिल वक्त के लिए वक्फा लिया गया है। कुछ ही देर के बाद